तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल. So let's do Oracle server installation. In this video, we'll try to learn Oracle server installation, that how you can install server on your machine, and then after that in the next video I'll try to teach you how you can install the client version and then how you can make a connection. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. आप अपने लैपटॉप में सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं. इंस्टॉलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर सर्वर ही नहीं है, क्लाइंट टूल ही नहीं है, अगर एप्लीकेशन ही नहीं है, तो फिर आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाएंगे, राइट. तो ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखना. बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मशीन के लिए. यू नीड विंडोज़ मशीन एंड देन यू नीड एटलीस्ट 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इट विल बी कंपैटिबल टू योर मशीन. All right, so let's directly jump to the screen. Hi all, I hope you are able to see my screen now. Screen पे आपको दो सॉफ्टवेयर दिख रहे रहेंगे. First one is Oracle Express Edition and the second one is SQL Developer, right? So what is this Oracle Express Edition? Oracle Express Edition is a server, is the Oracle server. So first you need to install this Oracle server on your machine, and then you need to have this SQL Developer. Now SQL Developer is a client tool where you can write your query and where you can execute your query. What is the difference between server and client, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. एंड हाउ यू कैन मेक अ कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में सिंपली वी विल इंस्टॉल दी Oracle SQL सर्वर ऑन आवर मशीन. इस वीडियो में हम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन में. तो what I will do is I will give you both the software, the link of both the software in the description box. Description box में आपको दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. It is around 400 MB और 300 MB, not much space. So space का भी उतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, right? So you will be getting the zip file the way you are seeing on your screen. Now what you will have to do is just simply right click on this Oracle Express Edition. I hope you are able to see it. So this is for 64-bit users. So if you have a Windows 10 or Windows 11 and if you have a 64-bit operating system, this will be compatible to your machine. अगर आपका 32-bit का machine है तो थोड़ा problem हो सकता है. Right click on this and then you have to click on show more options, and then you have to click on over here in this option extract to. So this entire software will be extracted to a separate folder. Right now I'm doing nothing. I'm just simply extracting this software. All right. So you can see that software has been extracted to this particular folder. Double click on this folder and double click over here. Click on this and you are able to see this option, right? Now right click over here and click on run as administrator. If you want to install this software on your machine, you have to click on run as administrator. You have to run it as an administrator, right? It is asking you, do you want to allow this app to make changes on your device? Click on yes. It is extracting that server on your machine. Let it be extracted. It will take hardly some minutes, not much time it will take. It will install and configure all the files, so please do not click on the cancel button in the middle. Now it is asking you this window, right? You have to click on the next button. Click on the next button. Click on this checkbox, I accept. इसके बाद बहुत ही important step है, we have to set up the password. So do not do that mistake that you keep on clicking on next button and without setting up your password. You are installing your software. That can create a problem. So just follow step by step. Click on this checkbox and click on next. And we have to click on next. Now here it is asking me to set my password, right? So what I will recommend is just simply set password root, ROOT, small में. We do not have to use capital letters. We just have to simply type root, ROOT. Confirm your password and click on next and click on install. Now again it is setting up all the configured files on your machine. So do not click on cancel. Let it be installed. It will take few minutes, so you have to have a patience for this. Till the software get installed, I'll just give you a brief idea about it, that how we gonna progress about this course.
इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर ऑन योर मशीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपने सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आई वुड से दैट इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर एंड देन सेटिंग अप द कनेक्शन फ्रॉम द क्लाइंट टूल टू दिस सर्वर. अगर आपने ये स्टेप कर लिया, देन आफ्टर सीइंग एवरी मॉड्यूल you will be able to perform your coding, you will be able to perform the practicals. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है या सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप अगर कोई है तो वो है इंस्टॉलिंग द रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर, राइट? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे. फिर बिल गेट्स भी आके अगर आपको पढ़ाएगा तो कोई मतलब नहीं है. तो बेटर ये है कि फॉलो द स्टेप. एंड इसके बाद जो प्लेलिस्ट हमने डिज़ाइन किया है उस प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप वी हैव शोन यू द टॉपिक. तो इफ़ द सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल, व्हाट इज़ द राइट वे टू लर्न? पहले आप उस वीडियो को पूरा देखो एंड देन आफ्टर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द कोड in your SQL developer. That is your client tool that we are going to configure in the next video. हर एक मॉड्यूल का कोड हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. यू हैव टू जस्ट कॉपी द कोड, पेस्ट द कोड इन योर SQL developer and then try to run the code. Alright, so अगर really if you want to become champion in SQL, इस प्लेलिस्ट को आपको लास्ट तक फॉलो करना है so that you can get a good idea. And definitely from this course, if you complete the entire course till the end, you will be able to crack the interview and definitely you will be able to grab a good high package. सो जो सर्वर है ओरेकल का वो इंस्टॉल हमने कर लिया है हमारी मशीन में. सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही था कि आपने जो पासवर्ड सेट किया था डेटाबेस का, दैट इज़ रूट, राइट? वो पासवर्ड आपको याद रखना है. दिस विल हेल्प यू टू कॉन्फ़िगर योर क्लाइंट टूल. ठीक है, तो अगर भूल गए हो तो उसको कहीं कॉपी में लिख लेना. पासवर्ड इज़ रूट फॉर दिस पर्टिकुलर डेटाबेस. अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपली फिनिश पे क्लिक करना है एंड वी आर डन. तो अभी हमने क्या किया, अपने लैपटॉप पे ओरेकल का सर्वर इंस्टॉल किया है, ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन सर्वर. नाउ लेट मी डू समथिंग फॉर क्लाइंट टूल. ये है हमारा SQL डेवलपर. आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा. SQL डेवलपर जो वर्जन है इसका वो है 18.4, राइट? तो ये कंपैटिबल है इस सर्वर के लिए. तो आपको यही वाला क्लाइंट टूल जो है वो इंस्टॉल करना है. आप अगर ऑनलाइन से कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं तो दैट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो अगर आप इस कोर्स में फ्रीली बहुत ही बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ना चाहते हैं तो द बेटर आइडिया इज़ दैट जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिया है SQL डेवलपर और ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन, वही आपको यूज़ करना है. ऑलराइट, सो यूज़ ओनली दिस वर्जन बिकॉज दिस इज़ कंपैटिबल विद दिस सर्वर ओरेकल SQL डेवलपर 18.4. राइट क्लिक करना है आपको इस पर एंड यू नीड टू क्लिक ऑन शो मोर ऑप्शन. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. आई एम नॉट इंस्टॉलिंग इट, आई एम जस्ट एक्सट्रैक्टिंग इट. दिस विल नॉट टेक मच टाइम, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड वेरी फास्टली. नाउ ये सॉफ्टवेयर अभी एक्सट्रैक्ट हो चुका है, दैट इज़ योर ओरेकल SQL डेवलपर, राइट? SQL डेवलपर, दिस इज़ अ क्लाइंट टूल. डबल क्लिक ऑन दिस. ये हमें इंस्टॉल नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्लिक करना है एंड देन वी आर गुड टू गो. बॉटम में आपको ये आइकन दिख रहा रहेगा SQL डेवलपर. दिस इज़ द आइकन फॉर SQL डेवलपर. नो नीड टू इंस्टॉल, वी जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन दिस एंड वी आर गुड टू गो. ऑल राइट, सो क्या करना है हमें यहाँ पे, सबसे पहले तो राइट क्लिक करिए यहाँ पे एंड क्लिक ऑन शो मोर ऑप्शंस. क्लिक ऑन सेंड टू, click on send to and then click on desktop. So it will create a shortcut on your desktop, right? हमें सिर्फ ये SQL डेवलपर है, ये चाहिए था. Now go to on your screen and you are able to see, I hope you are able to see this SQL developer shortcut, right? This is a client tool. Now double click on this. This is the user interface for Oracle SQL Developer. For the first time, it will take time to open it. And if you open it for the second time, definitely it's not going to take much time. So it will ask you, would you like to import preferences from a previous SQL Developer installation? So we have to say no.
it is giving you this window, Oracle users tracking. So I just close this window and maximize this, your Oracle SQL developer. This is the user interface for Oracle SQL developer, right? Now how to make a connection from the client tool to the server, ये जानेंगे हम next video में. So in the next video, I will try to teach you that how you can make a connection. To make a connection, simply just we have to click on this plus icon and this window will be coming up. You have to fill the details in this window and then you are good to go to set up a connection to the server, and you are good to go to run your SQL queries. I hope you understood how you can install the Oracle SQL server, and you do not need to install the client tool. You just need to extract, सिर्फ extract करना है आपको, और इस icon पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये user interface दिखेगा which will help you to connect to the server. See you in the next video for making a connection between client and server. Thank you so much.